ओके, सो रिवीजन में कुछ और टॉपिक्स रह गए हैं. लेट मी स्टार्ट फ्रॉम देयर. ओके जी, सो जी ट्रांसफॉर्म और उसके मुख्तलिफ पेयर्स हमने देख ली हैं. अभी हम रिवाइज करना चाहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द जी ट्रांसफॉर्म. सो बेसिकली प्रॉपर्टी वन जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की है वो ये कहती है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज अ रिंग और अ डिस्क इन द जी प्लेन सेंटर्ड एट द ओरिजिन. ओके, एंड इट इज इन जनरल between 0 and infinity. So there is this, you can either have the right hand side sequence from which z is greater than that r of r, or a left hand side sequence in which for which z is less than r of r, and दोनों का annular region भी हो सकता है, उन दोनों का डिस्क भी बन सकता है. X of e raised to power j omega absolutely converges if and only if ROC of x of z in x of z includes the unit circle. So ये पहले भी हमने कहा था कि x of e raised to power j omega, which is the discrete time Fourier transform, can converge, but that is only possible if region of convergence of x of z includes it. तो अगर annular region है और उस एनुअल रीजन में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर यूनिट सर्कल आ रहा है, तब भी डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा. अगर एक राइट हैंड साइड सीक्वेंस है और उसकी वैल्यू लेट्स से 0.9 है, तो 0.9 से आगे उस 0.9 के ऊपर पोल एग्जिस्ट करता है, उससे आगे आगे जो राइट हैंड साइड के सीक्वेंस जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है उसमें भी यूनिट सर्कल एग्जिस्ट करेगा. कोई ऐसा लेफ्ट हैंड साइड सीक्वेंस है जिसमें greater than 1 पोल एग्जिस्ट करता है. सो जैसे 1.1 है, तो 1.1 से लेफ्ट साइड पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट करेगा, तो वो भी यूनिट सर्कल उसमें इंक्लूडेड है. therefore there are many possibilities, but property 3 says that ROC cannot contain any pole. okay, so जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर पोल नहीं होगा. that is a very important property. Property 4 says that for a finite duration sequence which is 0 except in a finite interval. okay, so एक इंटरवल है -infinity to infinity के दरमियान. अब उस इंटरवल में n1 से n2 के दरमियान जो है एक finite duration sequence exist करता है. So the ROC is the entire Z plane, and it is entire Z plane except for Z equal to 0 or Z equal to infinity. तो एक एग्जांपल हमने इससे पिछले लेक्चर के पार्ट में की थी, जो इसी चीज को रिइटरेट कर रही थी for a sequence. Property 5, for a right hand sided sequence the ROC extends outward from the outermost, which is the largest magnitude finite pole in x of z. तो अगर मुख्तलिफ पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, मगर जो सबसे बड़े मैग्नीट्यूड का लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड का पोल होगा उससे आगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट करेगा. इट ऑल्सो मे इंक्लूड z इक्वल टू इंफिनिटी. ओके, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में z इक्वल टू इंफिनिटी भी शामिल हो सकता है. Property 6 कहती है for a left hand side sequence the ROC extends inward from the innermost, which is the smallest magnitude non-zero pole in x of z, and it may include z equal to 0. तो region of convergence में z equal to 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कौन सा सीक्वेंस है.
Finally, property 7 says that a two-sided sequence is a finite duration sequence in which ROC is a ring bounded by two adjacent poles, which does not include the unit circle. Okay, may include or may not include the unit circle, मगर उसके अंदर कोई पोल नहीं होगा. So ये नहीं हो सकता कि दो पोल्स हैं उनके दरमियान एक एनुलर रीजन है उसके अंदर भी कोई पोल होगा. ठीक है, so जो मिसिंग लाइन है which does not include any poles. Okay, so let's do an example. मेरा ख्याल है ये एग्जांपल आपने की हुई है, but a refresher is a must. So Z transform, मुख्तलिफ poles हैं. There are 3 poles for this, and there is a unit circle. Okay, and then given that if it is a right-hand sided sequence, you will look for the largest magnitude pole और वो C है, तो उससे आगे region of convergence होगा. अगर smallest magnitude pole को ले लें, considering that all 3 of them are left-hand sided sequence, तो वो A है. Okay, that is in part in C. For the case of a right-hand sided sequence and different left-hand sided sequence, हम ये consider कर सकते हैं that A is a right-hand side sequence, B and C are the left-hand side sequence. So B और A के दरमियान हमारा एक two-sided sequence exist करता है और उसमें जो है एक annular region बनेगा. Similarly, if you have B and A as the right-hand side sequence and C as the left-hand side sequence, so in that case, the annular region है वो between B and C होगा. So let's start with the actual lecture, which is the properties of Z transform. So the motivation of the properties of Z transform is that they are useful in studying discrete time signals and systems. And this is from section 3.4. They can also be used in conjunction with inverse Z transform, which we will study in section 3.3, to find the inverse Z transform of more complex sequences. Okay, so अगर properties पता होंगी तो inverse Z transform find करते वक्त ज़्यादा complex sequence के भी हम inverse Z transform easily find कर सकते हैं. These properties also help transform linear constant coefficient difference equations. So I hope आपने linear constant coefficient difference equation याद रखा हुआ है. जैसे अगर एक linear constant coefficient difference equation है y of n, which is equal to a y of n minus 1 plus x of n. तो अब इस linear constant coefficient difference equation को transform करने में to algebraic equations in terms of the transform variable z, these properties also help us. Okay, so these properties, number one of these properties is linearity. So supposedly that you have a sequence x of n and you multiply a with it. So अगर हम इसका z transform लेंगे तो a x of z उसका z transform होगा. The region of convergence will remain unchanged. That is the region of convergence is equal to r of x, where r of x represents a set of values of z such that you have r of r less than z mod, which is less than r of l. So for properties involving two sequences, let's suppose x1 है, x1 of n है और x2 of n है, ये दो different sequence है, इनका z transform लें और इनके साथ अगर दो ये value multiply हो रही है a, तो a ही x1 of z के साथ भी multiply होगी और जो region of convergence होगा it will be r x1. Similarly, for the case of another sequence
x2 and another value a being multiplied with it, तो उससे भी region of convergence जो है वो rx2 कहलाएगा. Okay? But once you combine these two sequences, let's suppose मैं x2 के साथ b multiply कर देता हूँ, तो a x1 z plus b x2 z हमारा z transform होगा. The region of convergence will contain the intersection between the two region of convergence rx1 and rx2. So ये चीज अगर हम देखें तो हमने जो एग्जांपल ऊपर देखी थी, एग्जांपल 3.4 3.5, तो वहां पे भी ये जो लिनियरिटी प्रॉपर्टी है वो यूज हो रही थी बिकॉज वी वर यूजिंग टू सीक्वेंसेस और उनका जो इंटरसेक्टिंग रीजन है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा. Another property is the time shift property or time shifting property. So if you have a sequence x of n minus n naught, उसका z transform जो है वो x of z के साथ z of minus n naught multiply होगा. So the region of convergence is r of x, and except for the possible addition or deletion of z equal to 0 or z equal to infinity. Okay. So because x of z के साथ z of minus n naught multiply हो रहा है, तो हम ये देख सकते हैं if you have x of z for example, तो 1 over z minus 1 over 4 इसका z transform है, and z mod is greater than 1 over 4. So this example 3.14 illustrates that if you have a shift or a delay in the sequence, so let's suppose मैं z of minus 1 एक sample का delay इसमें introduce करा देता हूँ इसी x of z में, so this resultantly will be this value 1 over 1 minus 1 over 4 z inverse, which is 1 over 4 of n u of n with a one sample delay. So this equivalently हम ये कह सकते हैं कि अगर इस डिनोमिनेटर में से z कॉमन ले लें आप, okay, so what you will get is 1 here minus 1 over 4 z inverse. So this common z that you have taken goes up and it is z of minus 1. Okay, so this z of minus 1 is actually a delay, a one sample delay in the sequence. Actual sequence 1 over 4 n u of n है, मगर जब आप delay दे देते हैं one sample का, तो 1 over 4 n minus 1 u of n minus 1 हो जाता है with z mod greater than 1 over 4. Okay, so अगर हम इस sequence 1 over 4 of n u of n को देखें तो ये भी इसका जो region of convergence है, it is z mod greater than 1 over 4, और अगर एक delay के साथ z of minus 1 का delay देते तब भी यही चीज हमें मिलती है time shift के केस में. Another important property is multiplication by an exponential sequence. So if you look at the x of n which is being multiplied by z naught of n, so x of z क्या हो जाएगा, x of z over z naught, whereas the region of convergence what will happen with it is that z naught mod will get multiplied with r of x. So ROC is r of x scaled by z naught mod, which means that if r of x is a set of values of z such that हमारे पास z जो था वो it is between r of r and r of l, तो z naught mod r of x क्या हो जाएगा, it is set of values such that r of r के साथ z naught mod भी multiply हो जाएगा और r of l के साथ z naught mod भी multiply हो जाएगा. Essentially, all poles and zero locations are scaled by a factor of z naught. So if x of z has a pole at z equal to z1, then x of z over z naught will have a pole at z equal to z naught into z1. Okay, so this will happen कि जो pole z1 पे है उसके साथ z0 भी multiply हो जाएगा. Now, if this z0 is a positive real number, the scaling can be interpreted as a shrinking or expanding of the z plane.
तो इसका क्या मतलब है, हमें पोल्स और जीरो की लोकेशंस चेंज हो जाएंगी। जब आप एक वैल्यू z0 मल्टीप्लाई कर देंगे एक रियल वैल्यू, तो वो डिपेंड करता है z0 क्या है, उसके अकॉर्डिंगली पोल और जीरो की लोकेशन चेंज हो जाएगी। बट इफ z0 इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू विद यूनिटी मैग्नीट्यूड, सो if z0 is e raised power j omega naught, the scaling corresponds to a rotation in the z plane by an angle of omega naught. And the poles and zero locations change in positions along circles around the origin. So that is called frequency translation, or in other words, modulation. So ho ye raha hai that if you have this z0 as a unity magnitude value, तो आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यू तो e रेज़ पावर j ओमेगा नॉट हो जाएगा रेज़ पावर n x of n, तो x of e रेज़ पावर माइनस j ओमेगा नॉट इनटू z, बेसिकली हम कह रहे हैं कि हो रहा है, दिस मींस कि x of e रेज़ पावर j ओमेगा चेंज हो जाएगा x of e रेज़ पावर j ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो आपको याद होगा कि मॉड्यूलेशन में जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पे चली जाती है। Here is an example in which it is illustrated further. तो अगर हमारे पास r of n cos omega naught n u of n है, तो हमारे पास जो सीक्वेंस आएगा वो स्टार्ट उसी तरह होगा जैसे u of n है। सो u of n का z ट्रांसफॉर्म 1/1 माइनस z इनवर्स है फॉर z ग्रेटर देन 1। ओके, नाउ बिकॉज हम r of n मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ, सो therefore the value, the region of convergence will shift from z mod greater than r. Okay. You can also divide the cosine cos omega naught n into two parts, cos को आप e raised power j omega naught plus e raised power minus j omega naught over 2 से भी लिख सकते हैं। Hence जो e raised power j omega naught है इसको r e raised power j omega naught raised power n हो जाएगा, and similarly r e raised power minus j omega naught raised power n हो जाएगा। ये भी एक सीक्वेंस है जो कि u of n से मल्टीप्लाई हो रहा है, and given that you have it's a right hand side sequence, तो आप इसको 1/1 minus r e raised power j omega naught z of minus 1 लिख सकते हैं, and similarly you can also write this one as 1/1 minus r e raised power j omega minus j omega naught z of minus 1. Okay? So this kind of is a frequency translation जो आप कर रहे हैं। इसको LCM लेके आप 1 minus r cos omega naught z inverse over 1 minus 2r cos omega naught z inverse plus r square z of minus 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जिसमें एक्सपोनेंशियल इस्तेमाल हो रहा है वो हमें एक सीक्वेंस है उसकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी या काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन इसमें हो रही है और वो हमें हेल्प करती है z ट्रांसफॉर्म में। Similarly, there are other properties like differentiation. So अगर आपके पास n x of n है, इसका z ट्रांसफॉर्म माइनस z d by dz of x of z है। Okay. The region of convergence will not change in that case. वही होगा जो कि एक sequence x of n का है। Similarly, if there is a conjugation of a complex sequence, तो conjugation property हमें ये कहती है कि you have x conjugate of n, तो उसका जो z transform है x conjugate of z conjugate होगा, region of convergence will not change. टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी के केस में x conjugate of minus n का z ट्रांसफॉर्म x conjugate of 1 over z conjugate होगा। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस विल बी 1 over r of x, यानी अगर पहले रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो 0.9 पे पोल एग्जिस्ट करता है, इट्स अ राइट हैंड साइड सीक्वेंस, तो वो आउटसाइड दैट इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो अब ये 1/0.9
हो जाएगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। सिमिलरली इफ यू हैव अ टाइम रिवर्सल के केस में अगर वो कॉम्प्लेक्स नहीं है तो r ऑफ x ऑफ माइनस n का z ट्रांसफॉर्म x ऑफ 1 ओवर z होगा विद सेम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दैट इज 1 ओवर r ऑफ x हो जाएगा। सो इसकी एग्जांपल्स हम जब इनवर्स z ट्रांसफॉर्म भी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा कुछ एग्जांपल जो हैं वो उसमें से रिलेटेड हैं, हम वो रिवाइज करेंगे। तो लास्टली the convolution. So अगर दो सीक्वेंसेस x1 of n, x2 of n आपस में कन्वॉल्व कर रहे हैं तो उनका जो z ट्रांसफॉर्म है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा and the region of convergence will be the intersection between rx1 and rx2. So finally I conclude my lecture. हमने देखा कि बेसिक z ट्रांसफॉर्म जो है वो क्या उसका फॉर्मूला है। बायलैटरल जी ट्रांसफॉर्म हम स्टडी कर रहे हैं विच इज़ अ टू साइडेड जी ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर फिर हमने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस और उनकी प्रॉपर्टीज भी देखी कि लेफ्ट हैंड साइडेड राइट हैंड साइडेड सीक्वेंसेस एनुलर सीक्वेंस हो उसके लिए क्या प्रॉपर्टीज हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या पोल्स के अंदर आता है या नहीं आता, वो भी हमने देखा कि इट डजंट इंक्लूड द पोल्स। फिर हमने कुछ एग्जांपल भी जी ट्रांसफॉर्म की बेसिक की, और हमने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिहाज से भी कुछ एग्जांपल्स देखी। प्रॉपर्टीज ऑफ जी ट्रांसफॉर्म हमने स्टार्ट किया है आज के लेक्चर में, और हमने लिनियरिटी, टाइम रिवर्सल, कन्वोल्यूशन, मॉड्यूलेशन यानी एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन जब हम कर रहे होते हैं, और रिलेटेड प्रॉपर्टीज, डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी हमने देखी है। सो ये प्रॉपर्टीज जब हम इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म पढ़ लेंगे तो फिर रिवाइज इनमें से कुछ एग्जांपल्स इनकी रिवाइज भी करेंगे, एंड होपफुली हम आपको कुछ असाइनमेंट्स में भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम देंगे ताकि आप कस्टम हो जाएं जी ट्रांसफॉर्म, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो इसका है, और प्रॉपर्टीज ऑफ जी ट्रांसफॉर्म से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। मैं आखिर में ये कहूँगा कि डू टेक टाइम आउट टू गो थ्रू दीज लेक्चर्स, बुक सामने रखें और लेक्चर स्लाइड्स को अच्छी तरह स्टडी करें, लेक्चर वीडियोस को देखें, उनको अच्छी तरह लिसन कर लें, उनको देख लें, और उसके बाद डू कम इन दी लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन, और ताकि आपकी कोई डाउट्स हैं तो वो वहाँ क्लियर हो जाए। फ्रॉम माय साइड, खुदा हाफिज़।